elections are drawing nearer, the high-voltage political face-off that seems to be intensifying. Top leaders of the Aam Aadmi Party, which has claimed that Ramesh Bidhuri, who is a BJP's candidate against CM Atishi from the Kalkaji seat, will be the party's CM face, and the official announcement in this regard will be soon made by the party. Now, this comes days after Ramesh Bidhuri kicked up a political storm with his controversial comments on Chief Minister Atishi and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra. Addressing a press briefing yesterday, AAP convener Arvind Kejriwal claimed that he has learned through his sources that Bidhuri would be declared as BJP CM face in a couple of days. Taunting the BJP candidate, Kejriwal even congratulated Bidhuri and also threw in a challenge to the BJP to participate in a debate between CM candidates of the two parties. Earlier speaking to Times Now, CM Atishi has also made a similar claim, saying that the Aam Aadmi Party also released a poster featuring Ramesh Bidhuri addressing him as BJP's abusive CM face. ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि एक दो दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूरी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश बिधूरी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूरी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या-क्या काम किए, कि उनका विजन क्या है दिल्ली को लेके, वो दिल्ली में और क्या-क्या काम कर। सूत्र आपके पक्के सूत्र जो ये कह रहे हैं कि रमेश बिधूरी सीएम का चेहरा होंगे। नहीं, कल बात हुई है सीईसी की मीटिंग में, कल रात को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में भी चर्चा हुई है। तो ये पहला चुनाव होगा जिसमें बीजेपी अपना चेहरा डिक्लेयर करके लड़ेगी। हो सकता है रमेश बिधूरी जी को डिक्लेयर करने की बात भी हो रही है और मैं समझती हूँ कि ये रमेश बिधूरी जी का डिक्लेरेशन ना सही भी होगा, क्योंकि पार्टी ही जब गाली गलौज पार्टी है तो सबसे ज्यादा गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को ही तो सीएम चेहरा बनाएंगे। However, Ramesh Bidhuri has reacted sharply to Kejriwal and the Aam Aadmi Party's claim, calling such remarks as a testament of a ruling party being scared of his candidacy from the Kalkaji constituency. He says that these claims are only being made because the Aam Aadmi Party wants his candidature against CM Atishi to be cancelled. Other BJP leaders are also slamming Kejriwal, asking why is he worried about who will be the CM face of the BJP. आज आतिशी जी ने इंटरव्यू दिया था, हम लोगों को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बिधूरी जी हैं, क्योंकि उनको ये कुछ बोलते नहीं, वो महिलाओं के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो इसका मतलब वही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या इनको पता चल गया है कि इनकी सरकार जा रही है? 100% की सरकार जाती है, उनका भय है, वो भय के कारण चाहते हैं किसी भी सूरत में बिधूरी यहाँ से कैंडिडेट बदल जाए तो मेरी जान बच जाए, ये है हकीकत। ठीक है, मेरा कहना ये है कि भाजपा का सीएम कौन होगा, अरविंद केजरीवाल को इसकी चिंता क्यों हो रही है? भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सीएम की घोषणा करेगा, लेकिन इससे एक बात तो तय है, अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ गया है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है। भाजपा का सीएम कैंडिडेट कौन होगा ये भाजपा घोषित करेगी ना। ये जो हथकंडे हैं, इन हथकंडों को दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। हमारे दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भाजपा का सीएम बनाएंगे। So right amid the face-off between the two parties that is intensifying, Congress party has also launched an attack on Kejriwal, slamming the Aam Aadmi Party for making him the CM face. Congress leaders going on to say that Arvind Kejriwal, who is out on bail in Liquorgate case, cannot assume the CM's role because he has been restrained by the Supreme Court directly from entering the CM's office or signing on any file. The Congress party says they will now speak to their party leaders and consider sending a legal notice to Kejriwal for misleading the people of Delhi. केजरीवाल जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि आम आदमी पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो ही नहीं सकता। मैं तो अपनी पार्टी से बात करूंगा कि एक लीगल नोटिस हम आम आदमी पार्टी को भेजें कि दिल्ली के लोगों को इस तरीके से गुमराह ना करें। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री बनकर वो कार्यालय में नहीं बैठ सकते, तो दिल्ली की जनता को क्यों झूठ बोल रहे हैं? Well, let's get in a word from Isha. Isha, good morning. It seems to be getting intenser as far as the CM's face and the choice is concerned, because apart from Arvind Kejriwal from the Aam Aadmi Party, who is already facing legal hurdles, the BJP and the Congress, however, have not picked their choice.
Right, Amita, very good morning to you. And the national capital is seeing a very interesting triangular fight between the BJP, Congress and the Aam Aadmi Party. The Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal is the CM face, and it has been clear since the very beginning that if the Aam Aadmi Party wins, Arvind Kejriwal will be the chief ministerial candidate. But again, the question that comes to the fore is that Arvind Kejriwal is still an accused in the alleged Liquorgate scandal. So it is to be seen that he still has not been given a clean chit by the court. He's just out on bail, and the court has also said that he cannot exercise the duties of a chief minister. He can't step into the CM office. So again, the huge question is that how will that work out, because he still has not got a clean chit from the court. While when we come and speak about the BJP and the Congress, both parties don't have a CM face. Both parties don't have a leader leading their election campaigning, and that is definitely working negatively for both parties. And now Right. Ramesh Biduri, the controversial BJP leader who's also been slammed for making several Islamophobic and also anti-women statements, it is the Aam Aadmi Party is heading out of the BJP stating that it may be a possibility that Ramesh Biduri may be the CM candidate. But again, Ramesh Officially, Biduri however, no party that has now announced as far as the BJP or the Congress party is concerned. Thank you very much, Isha, for joining in at this point.